Welcome all, welcome all. Very happy good evening, beta. Divya Prakash, Shailesh. You're all welcome. How are you all, beta? कैसे हो सभी लोग? Hope you had completed your homework. Hello, beta Jayesh. Very happy good evening. Hello, beta Pintu. Very good, beta. So now we are in lecture number 2 of numerical methods. That is numerical methods part 2. And today I will try to complete remaining 3 methods of system of linear equations. A very happy good evening to all of you once again. Very happy good evening to Kajal, Rishikesh. Very happy good evening to all of you. As you all know, this is Gaurav Srivastav Sir Educator Head, Gate Chemic Learning App, Gate Chemic Institute with 11 plus years of teaching experience. And today, beta, I am here to deliver beautiful lecture number 2. Okay, so now I am going to start, beta. I will wait for next 30 seconds. Okay, students are joining. Hello, beta Chetan. How are you, beta Chetan? How are you? Very good. One thing you must clear, beta. In matrix chapter, one term, that is A inverse. This is what? This is inverse of A. This is inverse of A. In matrix chapter, I will teach you a beautiful technique to obtain inverse of A. Okay, so don't worry that A inverse you can find only the way I am going to tell you in Gauss-Jordan method. Okay, beta. Hello, beta Shajid. Okay, beta. So now I'm going to start, beta. So Gauss-Jordan method. Gauss-Jordan method. This method is also used to solve linear equations. System of linear equations. Unknowns can be 2, can be 4, can be 3, any number of unknowns. But one thing you must clear. Coefficient matrix must be square. That means number of unknowns must become equal to number of equations. Again, in similar manner as you had already seen in first method, that was Gauss elimination method. Okay, beta. So what is Gauss Jordan method? This method is very easy, beta. बहुत ही आसान. It is very easy. See here. First, just write your coefficient matrix with identity matrix. And what is Gauss Jordan method, beta? When I am going to apply Gauss Jordan method here, beta, then I am trying to convert this coefficient matrix into identity matrix. Again, beta, never do any column operation. Only and only I will perform. Only and only I will perform here. Same too. Only and only row operations. So by applying row operations, I will try to convert this A into I. Once this A converted to I, automatically this I will be converted into A inverse. Once you got A inverse, you can also obtain this A inverse in other manner too, like by matrix simple method, that is by forming cofactor matrix. Okay, I will teach you in matrix chapter, beta. Okay, if any doubt, beta, immediately feel free to ask me. You can ask your doubt in Hindi as well as in English. Okay, so अभी अगर क्लियर नहीं हो रहा, if
नॉट क्लियर टिल नाउ, डोंट वरी. अभी जब इसको अप्लाई करेंगे, then by application, by solving problem, it will clear to all of you beta. Okay, now see here, see, after operating lots of row operations, you will get a inverse. Once you got a inverse, now this is your step number 1. In second step, it's very easy beta. In second step, this x can be written as a inverse b. You know na, initially it was like ax equals to b. Yesterday I told you na, what is ax equals to b? That is system of linear equations. System of linear equations. This a shows what? This a shows coefficient matrix. This a shows coefficient matrix. This x maybe x1, x2, x3 or x, y, z. And b is what? This is right hand side, that is column matrix. RHS of equations is also known as column matrix. That means if you want to solve any problem relating Gauss-Jordan method, then you must know how to multiply two matrices. How to multiply two matrices. So, but it's very easy. What is this? This B is column matrix. Column matrix. Here, only one column. Only one column. You will get better only and only one column. Okay, and multiplication is also very easy. I will told you when I solve problems. Okay, so without any delay, I am going to apply this Gauss-Jordan method on this beautiful problem. Solve the following system of equations by Gauss-Jordan method. It's very easy beta. See here, I am going to solve this problem beta. बहुत ही आसान है. It's very easy. Okay, now see. Wait. Okay, so here the matrix, coefficient matrix was ax equals to b. First, if you want to write ax equals to b, then what is this ax equals to b? A is, what is a is 1 1 1, then 44 3 and minus 1. Here 3 5 plus 3, so 3 5 and plus 3. Very happy. Good evening beta. Why down? How are you beta? And here in place of x, I can write x, y, z. And what is b? B is again column matrix, and it should be 1 6 4. Now I am going to solve this. How? By converting this into x equals to a inverse b. A inverse b. Okay, so please mention this as your equation number 1. Okay, now come to the basic beta. As I already told you, first stage of elimination here is a to I, and I will convert this into this form. I is to a inverse. How? Now see beta. See beauty of concept. It's very easy. In place of a, our column matrix, our coefficient matrix was 1 1 1. See here, it's 1 1 1, 4 3 minus 1, 4 3 minus 1, and 3 5 3 beta. 3 5 3. Okay, so this is our coefficient matrix, and in this side, identity matrix. Identity matrix, what is identity matrix beta? Identity matrix whose diagonal elements are 1, and except diagonal elements, all other elements must be 0. That type of matrix is known as identity matrix. This is what? This is identity matrix. This is identity matrix. So now I am going to perform few operations beta. See, it's very easy. So first operation I am going to perform, I am going to write in place of R2. I want 0. Where? Which place? यहाँ हम कहाँ जीरो करना चाहते हैं? I am showing you बेटा. See, I want 0 here. I want 0 here. I want 0 here. I want 0 here. I want 0 here, and I also want 0 here. And I want 1 here.
I want 1 here. So how? So it is little bit difficult for you, beta, but no need to worry. If in your examination they ask you this method, then if they ask a inverse, then no need to do this row operation. Just follow simple cofactor matrix style of obtaining a inverse. I will teach you in matrix chapter. ओके, फिलहाल यहाँ आपको थोड़ा रो ऑपरेशन सिखाते हैं. यहाँ ध्यान दें बेटा आप सभी लोग. इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टू. एक बार आ जाता है ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट इन प्लेस ऑफ R2 minus 4R1. R2 minus 4R1. Okay, now next one, this is now 0, and next operation in place of R3 I can write R3 minus 3R1. And also beta, before performing any step of row operations, first see is partial pivoting is there, like 1 is here, okay, 3 is here, okay, 3 is here. That's very good. So सॉरी हियर नो, पार्शियल पावर्टिंग के द्वारा भी इसे कर सकते हैं. यू कैन सॉल्व दिस बाय पार्शियल पावर्टिंग, बट अभी इसे विदाउट पार्शियल पावर्टिंग ही कर रहे हैं. सी हियर बाय सिंपल वे. सो इट्स 1 1 1 4 3 minus 1 and 3 5 3. So after performing these two operations, another equivalent matrix will be R2, R1 will remain same, and 4 minus 4 will give you 0, and 3 minus 4 will give you -1, and -1 minus 4 will give you -5. Similarly, 3 minus 3 will give you 0, and 5 minus 3 will give you 2, and 3 minus 3 will give you 0. It's very very good. Similarly here, the first row will remain same and 0. So this minus this, so it's -4, and here 0, no sorry, 1 minus anything will give you 1 minus 0 will give you 1. 1 minus 4 into 0, that means it will remain 1, and 0 minus anything multiplied by 0 will give you 0. Similarly here you will get 0 minus 3, it's -3, and 0 minus 3 into 0, it will give you 0, and 1 minus 3 into 0, again 1. So this is my first step. Okay, now in next step, uh, I can write in place of R2 minus R2. I don't want here this minus sign. Okay, so it will change like this. So 0 1 5 0 2 0, and 1 double 0, and this is 4, this is -1, and this is 0, this is -3, this is 0, this is 1. ओके बेटा, थोड़ा सा ये बोरिंग होता है रो ऑपरेशन को करना, बट डोंट वरी, इसे आपको परफॉर्म नहीं करने देंगे हम. ओके, आई विल गिव यू अनदर मेथड, and the most important thing will start after 5 minutes approximately. Okay, now next operation, I want 0, I want 0 here, and how? That means this minus 2 R2, it will give you 0 here. Okay, so next stage I am going to write in place of R3 minus 2 R2, it will give you R3 को केवल बदल लो बेटा, you are changing only and only R3, that means 1 1 1 R1 and R2, again same to same, 1 1 1 0 1 5 and 0 2 0 in place of 0 2 0. Now after performing this equation, this operation, it will be 0 0 minus 10. Okay, I already done these things, so to save time I am writing directly here. After this operation, what will come? If you got something different, then ask me beta. Okay, and then next operation I am going to write in place of R3 by -10. Okay, R3 by -10, and by performing this one, why -10? Because -10 by -10 will give me 1 here. Okay,
So 1 1 1 0 1 5 and 0, and it's also 0, but this become 1 now. Similarly here it's 1 0 0 2. Sorry, it's यहाँ पे चेक कर लेना यार, समथिंग, इसे रुको परफॉर्म करके देख लेते हैं, लगता है कुछ मिस्टेक हो रहा है. वेट, 1 -4 1, okay, correct. Then R2, so 4 -1 and 0, okay. Then in this line 1 0 0 4 -1 0, okay, also correct. यहाँ लगता है हमने गलती से 2 लिख दिया है. It will also 4, ये भी 4 ही होना चाहिए ना. परफॉर्म कर लेना बेटा, यहाँ थोड़ा टाइम बचा रहे हैं, ओके, क्योंकि ये परफॉर्म हमने किया हुआ है, सो थोड़ा सा टाइम बचा रहे हैं. अगर इसमें कुछ हल्का फुल्का मिस्टेक होगा देन आस्क मी, आई विल टेल यू. हम ऑपरेशन परफॉर्म करके माइनस वाइनस करके आपको दिखा देंगे, आई विल शो यू, ओके. एंड नेक्स्ट ऑपरेशन आफ्टर दिस, in place of R2 minus 5R3, and in place of R1 minus R3. इस ऑपरेशन के बाद आप क्या पास जाओगे, 1 1 0 0 1 0 0 0 1, and here you will get -1/10, 2/10, 1/10, and -15/10. थोड़ा सा टाइम बचा रहे हैं बेटा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट चूंकि सेमेस्टर वाले बच्चा भी इससे कर ले जाए इसलिए हम इतना परफॉर्म कर दे रहे हैं. बिकॉज ए इनवर्स आई विल टेल यू बाई अनदर शॉर्ट ट्रिक, ओके. एंड नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी इन प्लेस ऑफ R1, यू कैन राइट R1 minus R2. इसे फटाक से मुझे ख़त्म करने का है. नाउ यहाँ आपको जानते हो क्या मिल जाएगा, 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, and here you will get 7/5, 1/5, -2/5, and it's -3/2, 0, 1/2, 11/10, -1/5, -1/10, ओके. सो दिस इज योर ए इनवर्स बेटा, ये आपका ए इनवर्स मिल गया. इसके लिए हम आपको नेक्स्ट ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक. ओह सॉरी, जस्ट गिव मी फ्यू मोर सेकेंड्स बेटा, बस ये ख़त्म हो ही गया, क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को हम ज़्यादा समय नहीं देना चाहते. जस्ट कंप्लीट कर लेते हैं इसे फटाफट. एंड नाउ आई गॉट ए इनवर्स, एंड दैट ए इनवर्स वाज 7/5, 1/5, -2/5, -3/2, 0, 1/2, here 11/10, here -1/5, here -1/10 बेटा, ओके. हम इसको आपको बताएंगे इन मैट्रिक्स चैप्टर शॉर्ट ट्रिक, ओके. सो नो नीड टू वरी. एंड नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या थे आपके बेटा, x इक्वल्स टू a इनवर्स b. इन प्लेस ऑफ x यू कैन राइट x y z, and in RHS this is my A inverse. This is 7/5, 1/5, -2/5, -3/2, 0, 1/2. This is 11/10, -1/5, and -1/10, multiplied by B. B was column matrix and RHS was 1 6 1 6 4. How to multiply two matrix? See here beta, this multiplied by this plus this multiplied by this plus this multiplied by this, ओके. तो चलो करके देखते हैं क्या मिलता है. 7/5 into 1 will give you 7/5, and plus 1/5 into 6 it will give you 6/5, and -2/5 into 4 that means -8/5. so 5 LCM, 7 plus 6 minus 8, ये हो गया 13 minus 8. 13 minus 8 will give you 5/5, ये आपका 1 आ जाएगा, ओके. सो सिमिलरली जैसे आपने बेटा यहाँ पे 1 पाए, सिमिलरली नाउ 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ हम मैच कर देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी. अभी थोड़ा सीख लो, इसे रिवीजन भी आप कर लोगे इन मैट्रिक्स चैप्टर. सो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस
plus this multiplied by this. Okay, and after completing this, you will get 1 by 2 similarly to 1. And now in next step, this 11 by 10 multiplied by this one plus 1 by 5 into this 5 plus 1 by 10 into this 4. After solving, you will get minus 1 by 2. So this is your final answer, beta. This is your final answer, that is x y z equals to 1 1 by 2 minus 1 by 2. Okay, so this method is very very easy, beta, and no need to obtain this A inverse by this method. I will tell you short method, simple method in matrix chapter. In matrix chapter. Okay, so I hope you enjoyed this method too, beta. And in this method, they can ask you just A inverse. Okay, that means in examination they are not going to ask you the value of x, y, z, because by trial and error method you can check which option is going to satisfy. Okay, तो इससे आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट हमने ये कंप्लीट करने के लिए आपको ये भी जल्दी जल्दी बता दिया फॉर कॉलेज सेमेस्टर पर्पस. अभी वापस से आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. फ्रॉम दिस टॉपिक in your gate examination they can ask you lots of problem, beta, and it's very very important. This iterative method is very very important for gate. This is very very important for gate. ये बहुत ही ज़्यादा important है बेटा. This topic is important for gate. Okay, now see what is iterative method. So first question they can ask you in your examination, which one shows iterative method. So this is simple fundamental equation of iterative method. X to the power k plus 1 equals to h x to the power k plus c. What is x k plus 1 and x to the power k? These are approximation of x in the k plus 1th operation or iteration and kth iteration. और यहाँ h को क्या कहते हैं? This h is known as iteration matrix. This c is known as column matrix. Now see, 1 mark problem. 1 mark simple problem. Okay, from basics. In your previous year question papers, you can see basics already asked from Yin, Gauss and Stokes theorems. A simple graph, circle graph, their cycle. Okay, similarly from this iterative method they can ask you which one is correct. अभी आपको ये feel भी होगा. Just give me 1 minute, then you will feel what is this HC equals to what. Okay, now see here, and Gauss-Seidal method, Gauss-Jacobi method, these both are coming under category of this iterative method. This Gauss-Seidal method and this Gauss-Jacobi method, ये जो Gauss-Seidal है, Gauss-Jacobi है, this both comes under category of iterative method. 1 mark problem already asked in gate. Which one of the following is iterative method? And one option is there. Gauss-Seidal. Just take Gauss-Seidal. Got 1 mark. Already asked in previous year paper. Okay. Now see, what is H, what is C? For Gauss-Seidal method, H equals to minus D plus L whole inverse into U. C equals to D plus L whole inverse into P. They can ask you problems from here to 1 mark problem. They will give you this xk 1 hk xk plus c, and they will tell you if h is iteration matrix, c is column matrix. Then for Gauss-Seidal method, what is the value of h? So h is minus, I will tell you, don't worry, I am going to tell what is d, what is l, what is u. It's very very easy. अब इसको बहुत easy form में हम convert करेंगे, no need to worry. Okay, because ये basics हैं, यहाँ से भी आपके question बनते हैं. Okay, so h equals to minus d plus l inverse u. C equals to d plus l inverse p. Similarly, for Gauss-Jacobi method, the definition of the main iterative equation remains same. For Gauss-Jacobi method, the iterative equation is same, but the definition of h and c again changed. अभी आपको हम बताने जा रहे हैं ये क्या है h और c के अंदर d, l and u. What is d, what is l, what is u? Okay, so see here beta, from here they can ask you again 1 mark problem, simple.
Okay. Now what is L? What is D? What is U? See, this D shows diagonal elements. Diagonal, D for diagonal. And U shows in upper triangle except diagonal. In upper triangle. And L shows in lower triangle. Again, except diagonal. See, if you are going to make one beautiful 3 by 3 matrix, then this is your D, and this is your U, this is your U, this is your U, this is your D, this is your D, this is your L, this is your L, this is your L. This is first line. ओके, सो आई होप यू नो व्हाट इज डी, व्हाट इज यू एंड व्हाट इज यल. अभी बहुत मजा आने वाला है. ठीक है, किसी भी बुक में आपको यू आर नॉट गोइंग टू, आप कहीं भी नहीं पाओगे इन एनी बुक कि ये जो फंडामेंटल से स्टार्ट में आता कैसे. स्टार्ट बुक में डायरेक्टली प्रॉब्लम का ये दे दिया स्टार्टिंग का एंड स्टार्ट कर दिया. आई एम गोइंग टू डिराइव इन जस्ट 30 सेकेंड बेटा. सी हियर. So first I am going to discuss Gauss-Seidal method. I am going to discuss what? Gauss-Seidal method. So for Gauss-Seidal method, the iterative equation was same now. For Gauss-Seidal method, beta, iterative equation was same. That was x to the power k plus 1 equals to x to the power k plus c. Now see, I am going to put the value of h here. So what was the h? It's minus d plus l inverse u. You can see here this. Okay, and into x power k and plus what was c? C was d plus l inverse b. And now I am going to multiply d plus l in LHS as well as in RHS. So this d plus l inverse into d plus l, that means 1. So minus u x to the power k and here plus just b. So this equation can be written as d plus l x to the power k plus 1 plus u x to the power k, and that becomes equals to b. दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. जो आपके एग्जाम में आता था ना ऐसा क्वेश्चन आपके, तो अरे यार ये कहाँ से ही पूछ दिया, इंटरनेट पे भी नहीं मिल रहा, आई एम अनेबल टू फाइंड इवन ऑन इंटरनेट. सो दीज थिंग्स comes from basic. Every year from last 4 or 5 year they are going to ask problem from basics too. Okay, so this equation is also very very important. They can ask you 1 mark problem from here, and no need to worry, it's very easy to remember. इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. हमने कहा ना, जब पूरा अप्लाई कर देंगे बेटा, आप देखोगे ना ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा. ना याद हो तो हमें बताना. सो इट इज़ वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर. देखो ध्यान से देखो अभी कैसे रिमेंबर करा देते हैं आपको. सी हेलो मंथन. नो सी हियर. सपोज one beautiful set of equations given like a 1 x1 plus a 1 x2 plus a 1 x3 becomes equals to b1. Second equation, a x1 plus a x2 plus a 3 x3, that becomes equals to b2. And third one beta, a x1 plus a x2 plus a x3 equals to b3. अभी देखो कितना मजा आने वाला है. Solve. Okay, now these equations can be written as what? See here. In first, this a11, a12, a13. This a11 is what beta? This a11 is diagonal element. This a22 is diagonal element. This a33 is also diagonal element. And you can see with diagonal element x, k plus 1th approximation of x is there. The diagonal element के साथ क्या रहने वाला है? k plus 1th approximation.
So I am going to write here x to the power k plus 1, x1 to the power k plus 1, x2 to the power k plus 1, similarly x3 to the power k plus 1. Now x2, x3 and this x3, a12, a13, a23. These are what? This is upward triangular except diagonal. So u के साथ क्या रहेगा? Kth operation, kth approximation of x. u के साथ क्या रहेगा बेटा? Kth approximation of x. That means here you are going to write k, here you are going to write k, here you are going to write k. अभी देखो बहुत मजा आने वाला है बेटा, ठीक है? ये कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, इट्स माई गारंटी. अभी जितना पीछे हमने पढ़ा है ना, सब आप कहोगे सर ये तो पूरा याद है हमें. आई नो एवरीथिंग, नो नीड टू वरी. ठीक है, अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा बट बहुत आसान है. सी हियर, these are concept. Okay, now with lower triangular matrix, it's x k plus 1, it's x k plus 1. That means here you are going to write k plus 1 again, here you are going to write k plus 1 again, here you are going to write k plus 1 again. Now see बेटा, see बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है भाई. Now see here बेटा. Okay, this a11 x1. So first I want, suppose k is 0, suppose k is 0, that means this is 0th approximation, then this is my first approximation now. So this is x1 and first approximation k plus 1 can be written as what? This whole, this term and this term in RHS will give you b1 minus a12x2 to the power k minus a13 x3 to the power k and whole this a11. So 1 upon a11. ये आपका बेटा क्या है? If k equals to 0, then what is this? This is x1. And here x to the power k, it is x2 0 and this is x3 0. Okay, अभी देखो कितना मजा आएगा, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको. And from second one you have to find x2, means first approximation of x2. So similarly here you will get b2 minus a21 x1 k plus 1, this one, and minus a23 x3 k and this one. So 1 upon a22. Okay, थोड़ा सा संयम रखें, बहुत मजा आने वाला है बेटा. So x3, similarly you can obtain x3 k plus 1 and that becomes equals to, in similar manner, 1 upon a33 and b3 minus a31 x1 to the power k plus 1. अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होगी देन आस्क मी कि सर थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, बट बहुत आसान चीज़ें हैं इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहे हैं. ठीक है, फिर भी अगर समझना है देन यू कैन आस्क मी टू रिपीट एक्सप्लेनेशन. नो सी बेटा कितना आसान है. सी in this second equation we have x2 first and x1 first and x3 zeroth approximation. In this third one, x1 1, x2 1 to obtain x3 1. अब यहाँ देखो, initially we don't know anything, we don't know initial vector. What is initial vector? That means the initial value of x, y, z, the initial approximation of x, y, z. Maybe in your problem, they give you the value of x, y, z, initial value of x, y, z. But if nothing is there from your side, just you can assume 0. That means you are going to put x0 equals to 0, y0 equals to 0, z0 equals to 0. Or if in terms of x1, x2, x3, that means x10 equals to 0, x20 equals to 0, x30 equals to 0. Now see beta, initially you don't know na the value of x2, x3, so put here 0, here 0 and obtain first approximation of x1. Now you know this x1, first approximation of x1. So now
No need to use again zeroth approximation of x1. I know not this x1, so I am putting here. But still I don't know. X3, first approximation, so I'm using initial x3 0 operation. This one equals to 0. And in this way, I will obtain x2 first approximation of x2. In this way, I got first approximation of x2. Similarly, now I know the value of first approximation of x1 and first approximation of x2. So no need to put this zeroth approximation. So put here first approximation, and you will obtain first approximation of x3 2. That means आपने देखा कुछ भी याद नहीं करना है. जो नहीं पता था अभी दिमाग में कैसे याद रखेंगे. जो नहीं पता था पुट जीरो. जो नया मिलता जा रहा है अगले में वही रखते जाएंगे, और अभी जो नहीं मिला है उसको जीरो ही रखते जाएंगे. Okay, if you don't know the value, put 0, but once you got latest approximation, then put that value. I hope you all get better. Please tell me in comment section. समझ आया तो इसे फटाक से अप्लाई करें एक ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल के ऊपर. बोलो फटाक से बताओ बेटा. इट्स वेरी वेरी इजी. बहुत ही आसान है. इट्स वेरी वेरी इजी. अभी तो कुछ प्रॉब्लम पे तो और मजा आने वाला है. इस प्रॉब्लम पे तो और भी मजा आने वाला है. ओके, क्लियर बेटा? चलो सभी को क्लियर. सो नाउ हियर सी, solve the following equations by Gauss-Seidal method by performing 3 iterations with initial vector x0 equals to 0. This shows what beta? This shows I can take x1th 0th approximation as 0, x2th 0th approximation as 0, x3 0th approximation as 0. And they are asking for 3 iterations. That means our answer should be third approximation. In this problem, they ask this set of equation. That means third approximation. So first, I will calculate first approximation, then second, then third. In your examination, they can ask you for just 2 or just 1 approximation. Okay, बेटा? Yes, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, एक भी और दो भी. अभी देखो जितनी थ्योरी थी ना, अब वो सारी थ्योरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी. और जैसे कि हमने कहा बेटा, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इफ़ यू वांट अ वेरी गुड रैंक इन गेट, बिकॉज यहीं से प्रॉब्लम आ जाता है. ये सब चीज़ें पूछ देती हैं. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, तमाम पूछा है. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं ऐसे. ओके, सो अगर आप ये बेसिक्स नहीं जानोगे तो आप नहीं बता पाओगे व्हाट इज एच, व्हाट इज सी. यही कहोगे सर लगता है आउट ऑफ सिलेबस, दिस थिंग इज आउट ऑफ सिलेबस. बट इन मैथमेटिक्स स्टिल mathematics, but little bit theory present in mathematics too. Okay, so that theory, all problems or proofs based on that theory. Okay, now see here, ये कितना आसान हो गया. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. यहाँ भी आप चेक करोगे कि ये जो डायगोनल वाला है बड़ा रहे, सो इट इज़ बेटर फॉर यू बेटा. सो 2 ऑलरेडी हमने सेट कर दिया है इसे. एंड नाउ सी हियर, फर्स्ट इटरेशन कुछ उतना लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं. सी हियर बेटा, इट्स वेरी वेरी इजी. आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर. सो आई नीड x11, so this one, so 7 and minus x2, that means plus x2, and this is minus 0 x3 and whole, ये 2x1 था ना, so here 1/2. I don't know the value of x2 and x3 till now, so I am using 0th approximation. So this now become 1/2, 7, 0th approximation already given, initial vector 0, so this is 0 and minus 0. You can see beta, it's 7/2. कितना आसान है. Okay, similarly for x2, now this one, so 1 minus x1 will converted into plus x1, and minus x3 will be converted into plus x3, and here also 1/2. So you know now you know x1. So latest approximation here, देखो याद करने का तरीका, latest approximation present here, but again I don't know now x3, I don't know x3, so I am using last approximation, that is 0. And here 1/2, 1 x 1 1, that was 7/2,
and plus 0. After solving, here up LCM 2 and 2 plus 7 9, 9 by 2, 9 by 2 into 2 will give you 9 by 4. 9 by 4. Okay beta. Similarly, x3. Now I am going to obtain first approximation for x3. So this is my x3. So 1 minus 0 x1 and minus x2 will be converted to plus x2, and this is also 2x3. तो ये तो एक बाई चांस आ गया, हर जगह 2 2 2, इट मे बी 3. So 1 by 2, and I know x1 latest approximation, so 1 here, and I also know first approximation of x2. So here 1 minus 0 into x1 was 7 by 2 and plus x2 was 9 by 4, because 0 multiplied by anything will give you 0. So 1 plus 9 by 4. So 4 LCM 9 plus 4 13, 13 by 8. 13 by 8. Let me check. 7 by 2, 9 by 4. Yeah, absolutely correct. So if they ask just for one iteration, then this is my answer. This is my answer. But 3 approximation, चूंकि फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए आपको हम 3 करके दिखा देते हैं. Similarly, for second approximation, this is first iteration beta. This is my first iteration. Okay. Now I am going to perform second iteration. Beta, just tell me easy है कि नहीं. Just tell me everyone beta. Everyone easy लगने लगा कि नहीं? स्पीड में तो नहीं चल रहे हैं ना? Tell me beta, everyone. Crystal clear? Is it crystal clear to all of you beta? Now I want to calculate x12. Very good beta Pinto. And x22 second approximation of 2, and similarly second approximation of 3. So for first one beta, 1 by 2, same to same, 1 by 2, and here 7 plus x2, 7 plus x2, and minus 0 x3, minus 0 x3. Now my latest was first approximation, so I'm going to push first approximation here. Similarly for x22, it's 1 plus x1 plus x3. So 1 plus x1 plus x3, and here this is, now I know now second approximation of x1. So here second approximation of x1, I am going to use second approximation of x1, but I don't know still second approximation of x3. So I am going to use first approximation of x3. जो पता मिल गया है लेटेस्ट वाला यूज करते जाएंगे. ओके. नाउ थर्ड वन वाज 1 minus 0 x1 plus x2. 1 minus 0 x1 plus x2. Now I know second approximation of x1 and x2, so use there. So first one 1 by 2 7 plus x2 first approximation was 9 by 4, and 0 multiplied by anything will give you 0. And after solving, 7 4s are 28 and 9 37, 37 by 8. Okay. Similarly here 1 by 2, this is 1, and in place of x1 now put 37 by 8, क्योंकि ये आपका लेटेस्ट है. x3 लास्ट वाले का, क्योंकि अभी हमको x3 नहीं मिला यहाँ. लास्ट वाले में कितना आया था बेटा x3? It was 13 by 8. After solving this, you will get 58 by 16. 58 by 16, and it can be written as 29 by 8. 2 8 is 16, 2 29 is 58. Now here 1 by 2, 1 minus 0 will give you 0 plus x2. तो x2 आपका लेटेस्ट कौन सा है बेटा? लेटेस्ट was 29 by 8. So after solving 8 29 8 37, 37 by 8, 37 by 16. Yeah, absolutely correct. So this is my second approximation. अगर आपसे केवल सेकंड के बाद आंसर पूछता तो दिस इज योर सेट बेटा. बट पूछा क्या है? आफ्टर थर्ड इटरेशन, नो प्रॉब्लम. सो आई एम गोइंग टू परफॉर्म थर्ड इटरेशन हियर. थर्ड इटरेशन हियर. ओके. सो थर्ड इटरेशन आपको होमवर्क में दे देते हैं ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और आप चेक कर लो कि यही आ रहा है ना. ओके. सो x13 आपका क्या आएगा, x23 आपका क्या आएगा, और x33 आपका क्या आएगा. ऐसा करो अभी का अभी हमको बताओ.
ठीक है, अभी का अभी हमको बताओ ये कितना आ रहा है। ये आपका 85/16 आ रहा है या नहीं, ये आपका 69/16 आ रहा है कि नहीं, एंड दिस वन 85/32। सो अगर ये आ जाए देन टेल मी यस सर। इसके लिए आपको हम देते हैं पूरे 2 मिनट। चलो बेटा फटाफट करो, 1 मिनट रुक जाओ, स्लाइड गायब हो जाएगी, नो नीड टू वरी। जस्ट एक छोटा सा ब्यूटीफुल वाला इसके साथ हम टाइमर सेट करना चाहते हैं। जस्ट वेट, आ रही है स्लाइड वापस बेटा। ओके, सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। चलो ये तीनों ऑब्टेन करो और फिर लिखो यस सर आ गया। आराम से करो, नो नीड टू वरी। 2 मिनट हैं, 30 सेकेंड में करो या 2 मिनट में, लेकिन राइट आंसर देना, गलत मत करना बेटा। आफ्टर दिस आई विल गिव यू वन ब्यूटीफुल होमवर्क टू बेटा। कम ऑन एवरीवन, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग बेटा। राम विजय यादव मिस हो गया आपका, कंप्लीट कर लीजिएगा। टुमारो आई विल हियर अगेन सेम टाइम 9:30 PM एंड टुमारो टॉपिक्स विल बी न्यूटन रैप्शन मेथड, सेकेंड मेथड, बाइसेक्शन मेथड विद कन्वर्जेंस टू। कन्वर्जेंस भी आपको फीलिंग देंगे, पूरी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। getting sir same values, मजा आ गया चैन, वेरी गुड बेटा। एंड इन योर एग्जामिनेशन इफ दे आर गोइंग टू आस्क यू अप टू few decimal places, then you can convert these into decimal places. This will come 5.3125, second one 4.3125, third one 256563. okay, this is your final answer. ओके बेटा, मजा आया, आसान था ना, बोलो टेल मी बेटा, इजी था। नाउ यू गॉट ना फंडामेंटल, वेरी गुड इवनिंग बेटा रामानंद। नाउ यू गॉट द फंडामेंटल की जो सर ने स्टार्टिंग में ये थ्योरी वाला पार्ट के थ्रू ये कराया था, ये क्या ही था, ये देखने में तो डिफिकल्ट लग रहा था, बट नाउ यू कैन सी बेटा इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी ना। टेल मी एवरीवन वंस अगेन बेटा, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू एवरीवन वंस अगेन बेटा। जो भी डिले किया लेट किया है इसे फटाफट देख लेना, कंप्लीट कर लेना। ओके, फर्स्ट वाले में ए इनवर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू बेटा, ये केवल कॉलेज पर्पस के लिए बता दिया। ए इनवर्स आपको हम बताएंगे इन मैट्रिक्स चैप्टर अगेन, हाउ टू गेट ए इनवर्स इन बाय शॉर्टर मेथड। एंड दिस मेथड, इटरेटिव मेथड, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गेट, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर फर्स्ट का 93/16 आ रहा है पिंटू जी का, नहीं बेटा पिंटू 93/16 नहीं आएगा, कुछ तो मिस्टेक किया है रे बाबा, चेक करो पिंटू कि हम चेक कर दें। चलो भाई चेक कर देते हैं पिंटू जी के लिए। x1 पिंटू जी का क्यों चेंज आ रहा है, कोई बात नहीं पिंटू जी, आइए देखते हैं आपकी मिस्टेक। सेम आ रहा है दिव्य प्रकाश का। बेटा पिंटू आपने क्या मिस्टेक कर दिया भाई, ये देखो यहाँ से देखो 1/2 एंड 7 प्लस x2, तो x2 कौन सा रखेंगे, नीचे का तो पता नहीं, तो x2 ऊपर वाला रखेंगे, 29/8। ओके, एंड तीसरा तो है जीरो ठहरा, लग रहा है जीरो भूल गया है, जीरो नहीं लिखा है, तो ये क्या हो गया 8 7 8 जा 56, 56 एंड 9 65, 85/8, 85/8 बेटा आ तो गया एक ही बार में, देखो ना इट्स 85/16। पिंटू इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस सर आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत आसान है बेटा, इट इज़ वेरी वेरी इजी, ठीक है। एंड पूरी मैथमेटिक्स आपको ऐसे ही मजा आएगी, पूरी मैथमेटिक्स है, कोई भी चैप्टर हो, प्रोबेबिलिटी हो, मैट्रिक्स हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सब बहुत बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, फुल डिटेल विथ वेरी लेस टाइम, ठीक है। देखा आपने आज अभी 1 घंटे के आसपास हुआ और 3 मेथड हम लोग लगभग डिस्कस करने की कगार पे हैं। सो बेटा दिस इज योर होमवर्क, टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नहीं बेटा एग्जाम में पूछेगा तो आपको लगाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम की बात नहीं, एग्जाम में आपसे 2 इटरेशन के बाद पूछता है, देन यू हैव टू परफॉर्म 2 इटरेशन, दे कैन आस्क यू द वैल्यू ऑफ x22 इज,
तो आपको 2 इटरेशन पूछेगा तो आपको निकालना पड़ेगा। ओके बेटा, दिस इज शॉर्ट ट्रिक, इससे शॉर्ट नहीं है इसका शॉर्ट और कुछ नहीं है। अगर शॉर्ट होता देन आई विल टोल यू। ओके बेटा, अगर जिसका शॉर्ट होगा आई विल टेल यू, नो नीड टू वरी। लेकिन ये ट्रेशंस हैं, ये तो ऑलरेडी शॉर्ट हैं, छोटे छोटे। डेली टाइमिंग क्या होती है क्लास की बेटा? डेली टाइमिंग हमने फिक्स कर दी है 9:30 PM, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। लिंक अवेलेबल हो ना अवेलेबल हो, ऑटोमेटिकली आप मेरे चैनल पे आइए, 9:30 PM पे आपको हम मिल जाएगा। ओके बेटा, शॉर्ट ट्रिक आपको आगे बताएंगे जब आपका कोई ऐसा मेथड आएगा, कोई ऐसा टॉपिक आएगा जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक होंगे। ओके, इसकी यही शॉर्ट ट्रिक है। बिकॉज आप ये भी नहीं कह सकते कि आप जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें आप चीज़ों को, इक्वेशंस को, वैल्यूज़ को पुट करके देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हर एक इटरेशन में आप सेटिस्फैक्शन के पास पहुंच रहे हो। वो रियल वैल्यूज़ नहीं, अप्रॉक्स वैल्यूज़ हैं। तो शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं। शॉर्ट ट्रिक किसकी है? अगर गॉस एलिमिनेशन कहता और XYZ पूछता, पुट कर दो। कोई अप्रॉक्सीमेशन मेथड तो है नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे रहा है, पुट कर दो, देख लो कौन सा आपको सेटिस्फाई कर रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। ठीक है, इट्स वेरी इजी ना। चलो वेरी गुड। ये होमवर्क की स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, टेक स्क्रीनशॉट। तो लास्ट मेथड को फटाक से डिस्कस करके गुड नाइट कर लें, और कल मिलें आपके साथ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल न्यूटन रैप्शन मेथड के साथ। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? चलो, तो ये आपका है होमवर्क। और अभी हम आते हैं गॉस जैकोबी मेथड के ऊपर। सो गॉस जैकोबी मेथड इज सेम टू सेम, but the definition of H and C was different. Again, this was your iterative equation. H was iteration matrix, C was column matrix. And for Gauss-Jacobi, I already told you the value of H and C. In your examination, they can ask you. Okay, and to save time, I am directly giving you, after putting H and C, what will we get? You will get D x k plus 1 plus L plus U x to the power k, and that becomes equals to B. अभी ऊपर पुट करोगे ना, आफ्टर पुटिंग यू विल गेट these values, this equation, you will get this equation, and this equation can be asked in your examination. And this one is more simpler than last method. ये last method से भी simple है बेटा. This is simpler than last method. अब इसका डायरेक्टली एप्लीकेशन आपको बताएंगे। इसको A11 A22 करके हम टाइम को लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो A11 A22 करके देख लो कि किसके साथ K+1 आ रहा है, किसके साथ K आ रहा है। यू कैन चेक फ्रॉम विच एलिमेंट K+1 एंड विच what element x to the power k are coming. So ये हम नहीं आपको बता रहे, डायरेक्टली इसका एप्लीकेशन आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये आप कर लेना, ये आपको होमवर्क में हम आपको दे देते हैं। ठीक है, इसको आप परफॉर्म कर लेना। ओके, डायरेक्टली आपको हम दिखाते हैं। लास्ट वाला ही है, यू कैन सी सेम लास्ट प्रॉब्लम। आई थिंक वही है, लास्ट वाला ही है ना, या लास्ट प्रॉब्लम ही अगेन, या बट दिस टाइम सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ Gauss-Jacobi, and again 3 iterations. Gauss-Jacobi 3 iterations. See beta, what you had done in previous method, you are going to put latest value. You are going to put latest value of XYZ or latest value of X1, X2, X3 in each iteration. One line to remember Gauss-Seidal method. First thing, Gauss-Seidal method is an iterative method. Second thing, the iterative equation was x to the power k plus 1 equals to h x to the power k plus c, where the definition of h and c can be asked in examination, and also they can ask you after putting that h and c the final expression. That was very, very easy. So in Gauss-Seidal method, we were putting latest value of each xyz or x1, x2, x3 in each iteration, in each step. But only one thing you must remember: for Gauss-Jacobi method, you can't use latest value in same iteration. नहीं समझे?
अभी समझाते हैं, आप नहीं यूज करते सकते हो सेम इटरेशन में कोई लेटेस्ट वैल्यू. दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट x1, so you can use x11 for to calculate x11, to calculate x21, to calculate x31. You can use x10, x20, x30 only. If you are going to calculate x21, no, x22, x22, then to calculate x22, you can put all previous x11, x31. You are not going to put x12 और x21. अभी देखो समझाते हैं आपको, सॉल्यूशन से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. सी फर्स्ट इटरेशन बहुत आसान है बेटा. इट इज वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर. इतना आसान है ना, पूछो मत, पूछो मत, बहुत आसान है. इट्स वेरी वेरी इजी. फर्स्ट इटरेशन, सी हियर, फर्स्ट iteration. Okay, so I'm not going to use latest value in any iteration. I am going to use previous iteration value in each iteration. Initial vector x0, 0, that means it is already given that x0 is 0, 0th iteration of x2 is 0, 0th iteration of x3 is also 0. This is given. So for first iteration, that means k plus 1. So k is 0. So I am going to use x1 0, x2 0, x3 0 only. कितना आसान हो गया. अभी देखो, अभी देखो मजा आ जाएगा आपको. ये पिछले वाले से भी आसान है. इट इज मच 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 सिंपलर देन लास्ट वन. देखो यहां ध्यान से देखो. So for this x1 becomes equals to 7 plus x2 and minus 0 x3. So x11, for x11 I can put only 0 0. Similarly for x21 it's again 2x2, so 1 by 2 and 1 minus x1, that means plus x1, and here minus x3, this is minus x3, so plus x3. In previous method, you had put x1 1 here na, but in this method you will put x10 here, you will put x30 here. I hope अभी मजा आ गया होगा आपको, and everything is now super crystal clear to all of you. बेटा बोलो फटाफट. देखो शॉर्ट में आपको समझा दिया. सिमिलरली यहाँ x11 नहीं रहेगा, यहाँ x21 नहीं रहेगा. फर्स्ट के लिए सारा जीरो वाला आएगा. सो देखो ये तो जीरो हो गया क्योंकि जीरो वाला जीरो था. ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो. फटाक से ये हो जाएगा 7/2. दिस वन 1/2. दिस वन 1/2. Similarly, when I am going to perform second iteration, यही परफॉर्म लेट्स पेज पे करते हैं. I am going to perform. क्लियर सर, क्या बात है भाई, क्या ही बात है. आसान है ना, वेरी वेरी इजी. सो सेकेंड इटरेशन, सी हियर, for second iteration, this is my x1 beautiful, this is my x2 beautiful, this is my x3 2 beautiful, and equation was 1/2, 7 plus x2, 7 plus x2 minus 0 x3, 1/2, 1 plus x1 plus x3, 1 minus 0 x1 plus x2. Now see here beta, this is second approximation, so you are using just first approximation value here, no latest, just previous iteration values. So here 1/2, 7 plus first iteration of x2 was 1/2, so here I am putting 1/2, and 0 multiplied by anything will give you 0. So 2 7 is 14, 1 15, 15/4, 15/2, and 2 multiplied by this 2 will give you 15/4.
Similarly here beta, 1 by 2 and 1 plus x11 was 7 by 2, 7 by 2, and x31 was 1 by 2. So 2 LCM, 7 to 9 plus 1, 10. 10 by 2 will give you 5. So 5 into 1 by 2 will give you 5 by 2. Similarly here, 1 by 2 and 1 minus 0 multiplied by anything will give you 0, and x21. So x21 was 1 by 2. You can see here it's 1 by 2. After solving, 2 plus 1, 3 by 2, 3 by 4. Okay beta, so now please perform third iteration for me beta, everyone, and match your values. तो हम जान जाएं आपको आ गया. Please perform this third iteration for me beta. I am directly giving you values of third iteration. Check you got same or something different. If different, that means कुछ तो गलत हुआ है रे बाबा. अगर सही है तो बल्ले बल्ले. So first will come 19 by 4. Second will come 11 by 4. Third will come 7 by 4. Check everyone beta. Come on, फटाफट check कर लो भाई. Check कर लो भाई everyone. यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? कुछ और आ रहा है तो गड़बड़ है. Check everyone beta. Same sir, क्या बात है, क्या ही बात है. So if they are asking after third iteration, then this should be your answer. If they are going to ask after second iteration, then this should be your answer. If they are going to ask just after first iteration, then this should be your answer. And they can give you x10 in place of 0, they can write 1. In place of this 0, they can write 2. In place of this 0, they can give you 0, or they can give you -1. Anything they can give you as initial approximation. Nothing is given, then by default choose 0 0 0. If given in your problem, then choose that approximation according to your problem. Okay बेटा, बोलो मजा आया सभी को? ये भी क्लियर हो गया ना सभी का? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर ना? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? चलो होमवर्क दे देते हैं इसमें भी आपको, ब्यूटीफुल वाला एक मस्त वाला होमवर्क दे देते हैं भाई. ब्यूटीफुल होमवर्क. सी, क्या बात क्या बात क्या बात भाई. सो प्रॉब्लम नंबर 7 ले लो भैया. प्रॉब्लम नंबर 7 ले लो होमवर्क, और फटाफट भाग जाओ. देख लो भाई, 1 घंटे के आसपास ही लिए हैं, मुझसे ज़्यादा नहीं लिए हैं. 1 घंटे में ही सारी कहानी हमने सेट कर दी. ओके वेट, होमवर्क टाइप कर रहे हैं, फिर आपको शो हो जाएगा. ये 4y यहाँ हो जाएगा +2z. स्क्रीनशॉट लीजिए होमवर्क की फटाफट, और करके आज का आज से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. I am also making one beautiful PDF for you beta with all branches PYQs. वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए हम दे देंगे. इसके अलावा आपको कुछ भी देखने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा. No need to see anything from anywhere. Okay. Oh beta, so this is your problem number 7. One beautiful homework beta. स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट. हम इक्वेशन मिला लेते हैं. 4x plus y plus 2z equals to 4. 3x plus 5y plus z equals to 7. X plus y plus 3z equals to 3. Okay beta. Again by performing 3 iterations. Okay, but in examination they can ask you after just 1 iteration, after just 2 iteration. Okay, maximum 3 iterations they can give you in GATE examination. If nothing is there and they are going to ask you up to 2 decimal places, so perform iterations. लगातार परफॉर्म करते रहोगे, तब तक करते रहोगे जब तक कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस सेम वैल्यू नहीं आने लगती है. मीन्स मान लो फोर्थ इटरेशन में 1.252 आया, तो अगले में भी 1.251,
या 1.253, यानी कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस सेम आने लगा, सो दैट विल बी योर आंसर। अगर ऐसा कुछ पूछता है, नथिंग इज गिवन, कुछ कहने रहा है कि कितने इटरेशन तक, तो आप तब तक करोगे जब तक आपको उतने डेसिमल प्लेस तक सेम वैल्यू ना मिलने लगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करना है, पीवाईक्यूज या बुक? बेटा जस्ट प्रैक्टिस, जितना आपको अभी यहाँ दे रहे हैं होमवर्क ना, केवल यही एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, बाकी समय आप दूसरे सब्जेक्ट को दीजिए, मैथमेटिक्स में जितना करा रहे हैं मोर देन सफिशिएंट। इन सबको कराने के बाद हम आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करा देंगे, उसकी पीडीएफ फाइल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस सेट और फ्रॉम पीवाईक्यूज। ये सब पीवाईक्यूज आपके गेट के नहीं है, ठीक है, फिर आपको गेट के पीवाईक्यूज के हम प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर देंगे जब कंप्लीट होगा, ठीक है। सो कहीं भी और बुक में देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा जो भी टाइम बचता है दूसरे सब्जेक्ट को दीजिए, ठीक है। मैथ हम आपको ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं, अक्टूबर चल रहा है, तो डेफिनेटली आप भूलने वाले नहीं हो, नवंबर आने वाला है, तो लगभग एग्जामिनेशन के आस ही पास हो आप, ठीक है, लगभग आप 3-4 महीने के आसपास हो एग्जामिनेशन के, तो भूलने वाले आप नहीं हो, बस इतनी प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट। 13 मार्क्स, 13/13, ये वादा है भैया, 13/13 हम आपको कराएंगे, ठीक है, इन मैथ्स। ओके बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? ओके, सो आज के लिए इतना ही। इस छोटे से बच्चे की बात मत भूलना बेटा। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? या आई मस्ट डू माई रिविजन डेली, 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 आई मस्ट डू माई रिविजन डेली। अगर आपको रैंक चाहिए 100 बिटवीन 1 to 100, तो ये रिवीजन वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। एंड जो भी बच्चा पेड कोर्सेज के बारे में जानना चाहता हो, अभी बहुत ही खतरनाक वाला डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। प्योर न्यूमेरिकल बैच में हम आपको हर एक सब्जेक्ट के नए नए न्यूमेरिकल्स फ्रॉम मोर देन 300 बुक्स प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें लगभग 250 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन हो भी चुके हैं, और लगातार अभी इसमें बहुत सारी क्लासेस लगने वाली हैं बैक टू बैक, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। फटाक से उसको ज्वाइन हो जाइए, प्रैक्टिस करिए, साथ में जो मिस हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। अगर 300 से ज़्यादा किताब से आपने न्यूमेरिकल, बड़े बड़े न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए ना, तो डेफिनेटली आपका गेट में रैंक तो बनना ही बनना है। और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस पे बेटा। यूट्यूब पे जितना दिखा रहा है ना, उस पर आप मान लो 30 to 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है, 30 to 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है, ठीक है। जो भी आपका यूट्यूब का प्राइस अभी है 5999, लेकिन ये अभी ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जिसको भी लेना है सब्सक्रिप्शन, फील फ्री टू कॉल मी ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो टेक डेमो, आप डेमो ले सकते हो। पूरे के पूरे आपके 250 से ज़्यादा न्यूमेरिकल वहाँ पे एक्टिव कर दिए जाएंगे, उसे आराम से आप देख लें, सब कुछ देख लें, उसके बाद से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन आपके गेट के 2023 तक आपका वैलिड रहेगा, ओके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा आपसे टुमारो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बेटा, एंड अ वेरी हैप्पी गुड नाइट, टेक केयर। सभी लोग ध्यान रखना, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। कल के लिंक भी आपको जल्दी शेयर करते हैं, जब भी आपको लिंक मिलती है ट्राई टू शेयर विथ योर क्लासमेट्स टू, ओके। जिस भी ग्रुप में आप व्हाट्सएप पे रहते हैं वहाँ शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बेटा। आपके शेयर से ही देखो सारे कोर्सेज के प्राइस कम करते जा रहे हैं, और भी कम होंगे आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जब आपका आएगा हम और कम करेंगे 2024 के लिए, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बेटा, एंड अ वेरी हैप्पी गुड नाइट वंस अगेन, टेक केयर बेटा एवरीवन। Tomorrow I will discuss Newton-Raphson method, that is solution of algebraic and transcendental equations.